Hello students, our today's topic is issue of debentures for cash. So what is the accounting treatment when the debentures are issued for cash? The entry is very simple. When the debentures are issued, so entry is bank account debit to debenture application and allotment account, being the amount of debenture application received. Then the amount of debenture application and allotment will transfer to debenture account. So your entry is debenture application and allotment account debit to debenture account, and your final outcome is bank account debit to debenture account, because here the debenture application and allotment is credited in the first entry, and in second entry debenture application and allotment is debited. So the final outcome is bank to debenture account. So this is your basic and journal entry. Now, as you all know, the debentures can be issued at par, premium or discount. So when the debentures are issued at premium, what should be the journal entry? The journal entry is, first we are taking the basic journal entry, which is bank account debit to debenture application and allotment account, and then debenture application and allotment account debit to debenture account. So I have taken the same basic entry. Now what is the impact when the debentures are issued at premium? When the debentures are issued at premium, it is a gain for the business. कंपनी के लिए ये gain है. So that gain is to be credited. उस gain को हम क्या करेंगे? Credit करेंगे. Now by which account? Again the same account which we have taken at the time of issue of shares, that is to security premium reserve account. So ये जो premium पर हमने issue किया है, that is to be credited in the company's journal entries. So our final entry is bank account debit to debenture application and allotment account, then debenture application and allotment account debit to debenture account and to security premium reserve account. So this is your case 2 when the debentures are issued at a premium. Now let's see when the debentures are issued at discount. As you all know that debentures can be issued at discount also. So what are the debentures issued at, what is the journal entry when the debentures are issued at a discount? Again very simple, discount is a loss for the business, so it should be debited. So first entry is same basic entry which we have done earlier, bank account debit to debenture application and allotment account, and then debenture application and allotment account debit to debenture account, that is the basic entry. Now what is the impact of discount? Discount as a loss is to be debited. So journal entry में एक discount और add हो जाएगा, debit करेंगे उसको, and what is the name of the account? Discount on issue of debenture account. So this is the name of the account when the debentures are issued at discount. So जब debentures discount पे issue होते हैं, हम discount को debit कर देते हैं in the basic entry. So these are the 3 basic entries at the time of issue of debentures. Now when we are doing the entries of issue of debentures, we have to take the redemption conditions into consideration also. जब भी कभी हम डिबेंचर इशू की एंट्रीज करते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम रिडम्पशन किस अमाउंट पर करेंगे. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिडम्पशन किस अमाउंट पर? रिडम्पशन मीन्स रीपेमेंट ऑफ लोन, मतलब जो कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं, लोन लिया है, उस लोन की रीपेमेंट होगी. मे बी आफ्टर 10 ईयर्स, मे बी आफ्टर 5 ईयर्स, दैट इज स्पेसिफाइड, जो भी उस डिबेंचर सर्टिफिकेट में स्पेसिफाइड होगा. अब जब भी रीपेमेंट होगी उसकी 2 कंडीशंस हो सकती है. रिडम्पशन कैन बी एट पार और रिडम्पशन कैन बी एट प्रीमियम. नाउ व्हाट इज रिडम्पशन एट पार एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम? लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज कंपनी ने डिबेंचर इशू किया है फॉर द फेस वैल्यू ऑफ ₹100, मतलब कंपनी ने जो लोन लिया है वो एक डिबेंचर का वैल्यू है ₹100. सो इन रिटर्न प्रिंसिपल अमाउंट इज ₹100. उस पर इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो सकता है, मे बी 8%, 9%, 10%, 12%, कुछ भी हो सकता है. सो इंटरेस्ट इज टू बी पेड एनुअली. हर साल वो इंटरेस्ट कंपनी को पे करना पड़ेगा डिबेंचर होल्डर को. अब मेन आती है प्रिंसिपल अमाउंट की बात. सपोज द डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब 5 साल बाद कंपनी इस ₹100 के लोन को वापस कर देगी डिबेंचर होल्डर को. 2 कंडीशंस हो सकती हैं.
कंपनी कैन रिडीम दिस डिबेंचर्स एट पार, मीन्स 100 रुपीज़ का 100 ही कंपनी वापस करे प्रिंसिपल अमाउंट, और डिबेंचर्स कैन बी रिडीमेबल एट प्रीमियम. Premium means more than the face value, means company has decided that today you just pay us rupees 100 per debenture, and at the time of repayment will give you more than that face value. So when the company has decided to give more than the face value at the time of redemption, that is called redeemable at a premium of premium. Say the कंपनी ने डिसाइड किया कि आज की डेट पे आप हमें 100 रुपीज़ एज प्रिंसिपल अमाउंट दो, इन रिटर्न जब हम आपको वापस करेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट हम 100 की जगह 105 आपको वापस करेंगे. सो दैट 5 रुपीज़ इज अ प्रीमियम. अब व्हेन द कंपनी पेड मोर देन द फेस वैल्यू, जितना अमाउंट लिया उससे ज़्यादा पे कर रही है अगर कंपनी, सो दैट इज़ डेफिनेटली अ लॉस फॉर द बिजनेस. वो बिजनेस के लिए एक लॉस है, वो एक कंपनी के लिए लॉस है. सो दैट लॉस इज टू बी डेबिटेड, बिकॉज ये लॉस कंपनी ने इशू के टाइम पर ही डिसाइड कर लिया है. सो दैट लॉस इज टू बी डेबिटेड. नाउ लेट्स टेक व्हेन द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम. व्हेन द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम, again our basic entry will remain same. First we have to write our basic entry, which is bank account debit to debenture application and allotment account, then debenture application and allotment account debit to debenture account. So this is our basic entry. Now what is the impact when the debentures are redeemable at premium? When the debentures are redeemable at premium, there are two impacts of this particular transaction. One, there is a loss, जो कि आज की डेट पे ही कंपनी ने डिसाइड कर लिया, बिकॉज कंपनी इज पेइंग 5 रुपीज़ मोर. 5 रुपीज़ इज जस्ट एन एग्जाम्पल. 5 रुपीज़ मोर ऑन इट्स at the time of redemption of debenture. So this 5 rupees is a loss for the business, so loss is to be debited. So the account is loss on issue of debenture account. In the same way, when the suppose the debentures are redeemable after 5 years, तो कंपनी ने आज की डेट में ही अपने लिए एक लाइबिलिटी डिसाइड कर ली, और वो लाइबिलिटी है आपकी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट. So when it is a liability, so it should be credited. So your entry is, final entry is debenture application and allotment account debit, loss on issue of debenture account debit to person debenture account and to premium on redemption of debenture account. So this is your case 4, when the debentures are issued at par but redeemable at premium of 5%. So while doing the entries related with issue of debenture, you have to take one thing into consideration. Then when the debentures are redeemable at par, so your entries are very simple. You have to take only simple entries. So there may be 3 cases: par, premium and discount. But when the debentures are redeemable at premium, तो लॉस वाली एंट्री ज़रूर करनी है. लॉस डेबिट होगा एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्रेडिट होगा. लेट्स टेक 5th केस. अगेन the debentures are issued. In the last case, debentures are issued at par, but when the debentures are issued at premium and redeemable also at premium, issue भी premium पर हो रहे हैं और redemption भी premium पर हो रहा है. So what is the journal entry? What is the way to do the journal entry? First you have to write the basic entry, which is bank account debit to debenture application and allotment account, and next entry is your first entry, bank account debit to debenture application and allotment account, and your second entry is debenture application and allotment account debit to debenture account. This is your basic entry. Now let's see, when the debentures are issued at premium, जब डिबेंचर प्रीमियम पर इशू होते हैं तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करते हैं. सो आई हैव डन इट हियर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. देन रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, रिडीम प्रीमियम पर हो रहा है. जब रिडम्पशन प्रीमियम पर होता है तो हमें 2 अकाउंट लेने होते हैं: लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, विच इज टू बी डेबिटेड, एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट. So this was your case 5, when the debentures are issued at premium and 10% 10 premium, and the debentures are redeemable at premium also. Now your last case, when the debentures are issued at discount and redeemable at a premium.
सो व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, इशू तो डिबेंचर डिस्काउंट पर हुए हैं बट रिडीम हो रहे हैं प्रीमियम पर. अगेन व्हाट इज आवर मेथड? First we have to write the basic entry, and your basic entry is again same, bank account debit to debenture application account, application and allotment account, and second entry debenture application and allotment account debit to debenture account. Now the impact of different things, that these debentures are issued at discount. जब डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू होते हैं तो दैट डिस्काउंट इज टू बी डेबिटेड. सो व्हाट वी हैव डन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट. और जब डिबेंचर्स रिडीम होते हैं प्रीमियम पर, देन वी हैव टू लॉस द डेबिट एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट इज टू बी credited. So what we have done, we have debit the loss entry and credit the premium entry. So this is your topic, issue of debentures for cash.